आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ सीखने वाले हैं। यहाँ पे मैंने ये ट्वीट किया था ऑन 17 जून 2022, जहाँ पे निफ्टी तब 15,240 पे थी एंड मैं बोला था टुडे इज़ अ वेरी गुड डे फॉर मी टू डू सिप्स इन माय पोर्टफोलियो काउंटर। सो ऑफ कोर्स मेरे पास थोड़ा सा फंड है, इसीलिए मैं एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी अपनाता हूँ। बट अगर आपकी फ़ंड से 1 लाख से कम है, से फॉर एग्ज़ाम्पल, एंड एज अ रिजल्ट बट स्टिल यू वांट टू प्ले आउट कि अगर निफ्टी एक इंटरेस्टिंग लेवल्स पे आ गई, से फॉर एग्जांपल अगर निफ्टी कल 15,000 या 17,000 में आपको मिल रही है, सो व्हाट आर द वेज इन विच यू कैन डू एन इन्वेस्टमेंट। सो in this video we are going to discuss this. So these are few of the options, either via mutual funds or via ETFs. So I have always seen that people always do comment कि हाँ ये ETF है वो ETF है, क्योंकि and the only thing that they are considering is the performance. See, this is absolutely the very wrong way to go forward. और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि what are the options which are available और उन ऑप्शंस में क्या क्या खामियां हैं। एंड थर्ड ऑफ ऑल मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि अगर ETF या म्यूचुअल फंड अगर सिलेक्ट करता हूँ, सो व्हाट आर द क्राइटेरियाज जो मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है, सो जस्ट टाटा ओके बिफोर वी स्टार्ट, सो अगर आप कोई भी इंडेक्स से फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 में करते हो, सो देर आर 3 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड और ETFs which are available for any user, right? So the first thing is Nifty 50. सो निफ्टी 50 इंडेक्स जो होती है वो एकदम जो हमारी बेंचमार्क है निफ्टी 50, उसमें जिस तरह से जिस कंपनीज में जिस तरह से एसेट एलोकेशन है इन टर्म्स ऑफ वेटेज, वो उसी को ही रेप्लिकेट या मिमिक करती है। एंड ये जो वेटेज है ये हर 6 मंथ्स में चेंज होती रहती है। हमारी लास्ट जुलाई एंड में BSE सेबी ने उसको फिर डिस्क्लोज किया है, बट दिस इज़ समथिंग विच आई विल डिस्कस इन अनदर वीडियो। और वहाँ पे मैं वो भी दिखाऊंगा कि किस तरह से मैं अपना इन्वेस्टमेंट करता हूँ, एंड आई रियली डोंट गो फॉर म्यूचुअल फंड्स एंड ETFs स्पेशली फॉर निफ्टी 50 कंपनीज, और उसमें क्या क्या एडवांटेजेस हैं वो भी आपको उस वीडियो पे पता चलेगा। सो हियर वी आर गोइंग टू सी इनटू, सो बेसिकली देवर 3 कैटेगरीज। एक है निफ्टी 50 के जो बेंचमार्क्स है उनको रिप्लिकेट करती है। नंबर 20 इज़ वैल्यू 20। सो बेसिकली व्हाट इट डज इज, अगर आप देखते हो कि निफ्टी के जो टॉप 20 कंपनीज है, दे कंस्टिट्यूट 77 to 80% ऑफ एक्चुअल निफ्टी वेट्स। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे ओनली गो फॉर दोज टॉप 20 कंपनीज इन निफ्टी 50। ये सेकेंड कॉन्सेप्ट हैं, इसके भी बहुत सारे आपके म्यूचुअल फंड्स और ETFs हैं। एंड द थर्ड ऑप्शन इज़ इक्वल वेट। सो इक्वल वेट के लिए HDFC, निपॉन, इन सबके हैं, वेर दे allocate 2% in each of the Nifty 50 companies, which ultimately comes up to 100% of the allocation. So ये 3 indexes हैं। आई थिंक ये अपनी advantages और disadvantages हैं। So for me actually, अगर आप देखते हो कि if you are looking for equal weight, this is something like अगर आप सोचते हो कि हर कंपनी एक साथ एक तरीके से ग्रो करेगी, एंड दिस इज़ समथिंग विच आई एम नॉट वेरी सॉर्ट ऑफ, मतलब इस कॉन्सेप्ट को मैं बहुत ज़्यादा मानता नहीं हूँ। एंड सिमिलरली अगर आप निफ्टी 20 टॉप 20 का देखते हो, सो बेसिकली दिस टॉप 20 हैज़ अ मच बेटर चांस ऑफ अ सक्सेस कंपेयर टू एन इक्वल वेट। सो कम वॉट में, हियर मैं आपको कुछ ऑप्शंस दिखाऊंगा वे यू हैव दिस निफ्टी 50 इंडेक्स sort of funds. So few of the things which you can see, so we can start with the Tata, and one of the things here you can see this allocation handling, and so you can see Reliance as 10%, whereas HDFC has यहाँ पे HDFC 6, 8, 14%. So in general this is not what the right now the weight are, as a result of which ये is not actually the truth कि ये जिस तरह से निफ्टी 50 कर रही है, रिलायंस की वेटेज अभी 9% है और HDFC आफ्टर एमलगेशन 14-15% है। सो दिस इज़ समथिंग विच ऑलवेज कीप्स ऑन चेंजिंग, और इनको भी अपनी उस तरह से इसको रिफ्लेक्ट करना है। सो बेसिकली यू कैन सी द रीज़न वाई आई एम टेलिंग इज़ वाई द टॉप 20 मेक्स much better bet is because the financials as well as this energy sector that corresponds to 50% and technology is 12%. so ये 3 सेक्टर में ही आपको 65% आती हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच अगर आप इक्वल वेट करते हो, सो बेसिकली यू आर this is how you can go wrong in that sense. One of the very important criterias, actually 3 criterias होती है. So first important criteria for me is the alpha for any fund which is out there. So alpha मतलब होता है कि ये benchmark से किस तरह से whether उसको underperform या outperform कर रही है. So when you see this as a negative value, which means that this particular fund has been underperforming on an average of 0.7%. So basically अगर Nifty 20
परसेंट अगर राइज करती है, सो बेसिकली दिस फंड इज़ ओनली गोइंग फॉर 19.3%. सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ आई डोंट लाइक इन दैट सेंस. और यहाँ पे अगर आप देखते हो तो इन जनरल ओवरऑल ये 11-12% रिटर्न देती है. These are some of the peers, and we are going to look into all of them, say Bandhan, Nippon, HDFC and ICICI, as well as Tata. This is Sensex. So one of the important criteria for me is this expense ratio. Of course this is not fixed, and overall अगर आप एक लंबे time से for example 2-3 years down the line अगर आप investment करते हो, so basically you will see that the expense ratio always keeps on increasing. So basically this is not fixed, but at least 0.2 so 0.15 to 0.2, this is the industry standard for all of these funds. And one of the another criteria for me is this exit load. So you can see the redemption within 7 days. So after 7 days it's nil. So this is a sort of an okay. Okay in terms. And cons may, of course you can see this lower alpha. So this is definitely, so it has generated returns lower than the benchmark Nifty50. So इसकी जो returns हैं, this is much lower than actual benchmark. So this is the Tata one. Now let's have a look over here. This is the Bandhan. So for me at least Bandhan is looking good. और इसके कुछ कुछ reasons ये होते हैं कि first of all जो allocation है, HDFC is 14 and Reliance is 9.8, and this reflects very much to the weightage of the index which we have right now. So this is good. And in terms of that, return is again 11-12%, which you have already seen. इसकी expense ratio काफ़ी कम है, 0.1%, but of course it can go high, and the exit load is nil. So this is also something which is good. Now let's have a look at alpha. See, the alpha is 0.65%, so at least it's better in terms of alpha. And ये alpha theoretically अगर greater than 0 होती है, so basically that's like a dream fund in terms of returns. And the con is basically it's lower than the category average, but it is in general ये fund उतनी भी खराब नहीं है, but you have to see the fund management is something which is new, so we have to see how it performs in the very long run. The third one is Nippon, और इसमें भी अगर आप देखोगे allocation wise HDFC 15 ये ज़्यादा है, Reliance 11 ये भी ज़्यादा है. So basically it's also not that much nearer to what we have in terms of resource allocation in the Nifty50 weight. Expense ratio 0.15 है, which is like industry average, and exit load भी after 7 days it's nil. And so basically again con वही रहेगा. So you can see it's like 1% lower alpha. And the reason is because of this weightage. ये weightage जो Reliance और HDFC में है, this is much higher, and as a result of which, since these two funds were not able to perform, as a result of which you see this. Similarly you have HDFC, ये भी same होगा, and इसका भी alpha कम होनी चाहिए. And yeah, exactly 0.1% -1%, and again it's the same reason over here कि अगर आप इसमें देखते हो, ये देखो HDFC is like 15 over here, which is wrong, and Reliance is 11. So ये generally 14 होनी चाहिए और ये 9.5 इस तरह से होनी चाहिए. So but in general वो category wise अगर आप देखते हो, so 1 year return all have been 1%. इसकी expense ratio भी 0.2 पर है, which is higher, and exit load भी nil है after 3 days. So basically it's all the same. It's not much of a different from what we saw earlier in terms of. And ICICI की भी एक है, and this is also something if you look for resource allocation. So this is 11.9%, which is much higher, and HDFC के दो होंगे 7 and 17%. This is also much higher. I'm pretty sure इसकी alpha भी काफ़ी कम होगी. Let's see what's the alpha. 1.09 exactly. So as a result of which the weights are not very much reflecting what we have. Expense ratio काफ़ी कम है 0.16, and the exit load is also nil. So this is good, but the alpha is really bad, and this is what ICICI Prudential is giving you. This is Tata S&P BSE Sensex. This is the last one जो Sensex की को replicate करती है, और इसमें हम जल्दी से देख सकते हैं कि इसका एग्जिट लोड भी 7 दिन के बाद nil है. एक्सपेंस रेशियो काफ़ी हाई है 0.27. सो थियोरेटिकली इट इंडस्ट्री एवरेज 0.15 से 0.2 तक है, इसमें ये काफ़ी ज़्यादा है. इन टर्म्स ऑफ रिटर्न ये भी 11.2% ही रिटर्न की है, एंड द अल्फा इज -1.19. Oh God. So as a result of which, so these are the few ETFs and mutual fund options which you have, and as you can see that most of them
they are not that much. Bandhan at least has a far better alpha compared to all the rest which we saw right now. Expense ratio become high, but again this can go up and down, so it is nothing hard fixed. The advantage which here you can see the financials is 41.4%, and this is the reason why you have such a higher negative alpha, because your financials it should be around about 38%, इसमें 3% ज़्यादा है, और technology में भी ज़्यादा है. So basically these are few of the pros and cons which you can see from a fund perspective. In general everyone behaves the same, so the only thing which you have to consider is this expense ratio, but again it's not fixed, and it can go higher, it never goes lower, so it always goes higher. So this is something which you have to consider. The second thing is more in terms of when you are doing an investment in such a fund, of course it's for 3-4 years, or at least 1-2 year in that sense. And so what you can do is you can also look into this particular so basically all the funds may redemption nil hai after 7 days, you can take that, so that's absolutely not a problem. Hope this video is going to give you and talk about where I talked about all these different options you have. You can look into each one of them and then find the best one for you. So this video is not sponsored, it's just that I'm showing you what options are there if you want to do an investment in Nifty50 via ETFs or via mutual funds, and what are the advantages. Advantage वही है, there's only one advantage कि आपको अपने दिमाग नहीं चलाना है, जो भी हो रहा है आप just पैसा डालो and it's the end. This is the only advantage. Disadvantage भर भर के हैं. First of all, you don't have a control over your investment in that sense, क्योंकि अगर आपको कोई अच्छी say for example अगर आप just like मैंने 16,520 ये जो मैंने ट्वीट किया था, this one 15,240 में जो इन्वेस्टमेंट किया था, so basically this can happen at the starting of the day, and then Nifty can recover 200 points. So at the end of the day जब NAV calculate होगी उस तरह से आप कुछ points lose करोगे. So this is one disadvantage, और भी बाकी disadvantages हैं जो मैं next video में discuss करने वाला हूँ. Thanks a lot for listening. Hope this video is going to give you an idea of all the options which you have. और अगर आपकी fund less than 1 lakh या 2 lakhs है which you want to deploy for Nifty50, then theoretically this is the best option that you have got. Thanks a lot for listening. Hope this video is going to help you, and as always, bye bye.